Indian cricket legend Sunil Gavaskar was upset that he was not invited to present the Border Gavaskar Trophy to Australia after they won the 5th Test and sealed the series at Sydney. The trophy is named after Australian legend Alan Border and Gavaskar, but only Border was asked to present the trophy, and Gavaskar was ignored despite being present at the venue. Australia reclaimed the Border Gavaskar Trophy after 10 years with a 6-wicket win over India in the 5th and final test. We're also being joined by my colleague Shane, live from the newsroom to get us more on the story. Shane, 2 hits for India. One, the unfortunate loss of the team, and second, Gavaskar not being invited to present the trophy to the triumphing Aussies. Tell us more about this. I mean, it was bad enough really for India that they lost the Border Gavaskar Trophy. Remember, this is the first time in 10 years that the coveted trophy will not be in India's presence. But the fact of the matter is that Gavaskar being snubbed is really something that is a bit puzzling when you think about it, because this is a trophy named after Alan Border and Sunil Gavaskar. Now, it's understandable if Gavaskar wasn't present and if he was not there at the ground or if he had declined. But the fact is that he admitted that he actually wanted to be there to present the trophy, because in his own words, it didn't matter if it was India or Australia who won. This is a trophy named after him and named after Border. And so he wanted to be there along with Alan Border, who he now considers a good friend, to actually present the trophy. But he was informed before the match that if Australia were winning the trophy, then he wouldn't be needed. And as he said, it's really puzzling. And truth be told, it is hard not to agree with him, because this is a trophy that has been introduced, let's say, to symbolize the cricketing ties that India and Australia have had for years. So to not have both of these cricket legends there to present it, very, very strange snub indeed from the Australian side. Thanks, Shane. Thanks very much for joining us on the broadcast. We will keep tracking this story, but for now, it's time to slip into a short break. Prime Minister Narendra Modi launches several developmental and infrastructural projects in Delhi worth more than 12,200 crore rupees. Tracking this and a lot more for you on the other side of this short break. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है, और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। इसके बिना क्या होगा? हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है, 100% देखते हैं। मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ, थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए